Hare Krishna and Vinod Pranam Prabhu. Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Srimad Bhagavatam reading sessions. Hare Krishna Maharaj. So let me share the quiz results for yesterday's session. Okay. So total 11 members are there. So total we have 6 participants today. And this is the okay. Atul Prabhu, number 1 position. Pinky Mataji, all correct. Second position. Anand Vilasni Radha Mataji, all correct. Third, then Shivani, and then Anshi Devi, and then Vedansh. Very nice. दो गलत हो गए वेदांश. Okay, perfect. So today we have His Grace Team Goputra Prabhu. So Prabhuji will enlighten us today with the Bhagavatam reading. We are going to start from 14th chapter, 9th number verse. So over to Prabhuji. Hare Krishna, and then pranam to all the devotees. Hare Krishna, thank you all the devotees for joining the class. शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे. आवाज आ रही है प्रभु जी? Yes, Prabhu. नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामिनि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण मंत्र की जय. अनंत कोटि गण वैष्णव की जय. आंशा कंतर विश्व के बस हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप करेंगे जो कल हमने पढ़ा था. तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड चल रहा है कि महाराज युधिष्ठिर बात कर रहे हैं अपने छोटे भाई भीम से कि कैसे उन्होंने अर्जुन को भेजा था द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता करने के लिए. और उनको गए हुए अब काफी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो जाते हैं और वो आते नहीं. तो वो चिंतित हो जाते हैं और इन बिटवीन महाराज युधिष्ठिर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कई तरह के इनस्पिशियस साइन ऑब्जर्व करते हैं अपने राज्य में और या उनकी प्रजा के बीच में. तो जिनको देख के और भी विचलित या चिंतित हो जाते हैं और उनको फिर रह रह के वही नारद ऋषि वाली जो उनसे वार्तालाप हुई थी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इस लोक से जल्द ही वापस चले जाएंगे. तो उनको बार बार यही हो रहा था कि कहीं भगवान श्री कृष्ण चले तो नहीं गए या जाने वाले, इसलिए ये सारे साइंस अपीयर हो रहे हैं. तो उसी को कंटिन्यूशन में हम आज का आगे का सेशन करेंगे. ये वर्स नंबर है 149. प्रभु जी आप वर्स पढ़ सकते हैं, फिर मैं आगे ट्रांसलेशन. Yes. यस्मान्ना संपदो राज्यं दारः प्राणकुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकश्च यद् अनुगृहात्. Translation. From him only our kingly opulence, good wives, lives, progeny, control over subjects, victory over enemies, and future accommodation in higher planets have become possible. All this is due to his causeless mercy upon us. Purport. Material prosperity consists of a good wife, good home, sufficient land, good children, aristocratic family relations, victory over competitors, and by pious work, attainment of accommodations in the higher celestial planets for better facilities of material amenities. These facilities are earned not only by one's hard manual labor or by unfair means, but by the mercy of the Supreme Lord. Prosperity earned by one's personal endeavor
Prosperity earned by one's personal endeavor also depends on the mercy of the Lord. Personal labor must be there in addition to the Lord's benediction. But without the Lord's benediction, no one is successful simply by personal labor. The modernized man of Kali Yuga believes in personal endeavor and denies the benediction of the Supreme Lord. Even a great sannyasi of India delivered speeches in Chicago protesting the benedictions of the Supreme Lord. But as far as Vedic Shastras are concerned, as we find in the pages of Srimad Bhagavatam, the ultimate sanction for all success rests in the hands of the Supreme Lord. Maharaj Yudhishthir admits this truth in his personal success, and it behoves one to follow in the footsteps of a great king and devotee of the Lord to make life a full success. If one could achieve success without the sanction of the Lord, then no medical practitioner would fail to cure a patient, despite the most advanced treatment of a suffering patient by the most up to date medical practitioner, there is death. And even in the most hopeless case, without medical treatment, a patient is cured astonishingly. Therefore, the conclusion is that the God's sanction is the immediate cause for all happening, good or bad. Any successful man feel grateful to the Lord for all he has achieved. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की हम जैसे भौतिक समाज में हर कोई क्या चाहता है कि एक अच्छी फैमिली हो, अच्छा जॉब हो, अच्छी बैंक बैलेंस हो, मतलब ही वांट्स ए परफेक्ट लाइफ। और उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसके लिए प्रभुपाद आगे इसमें बता रहे हैं कि इसके लिए ठीक है हमें हार्ड वर्क या लेबर करना पड़ता है, बट उन सबसे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये हम जो भी एंडेवर कर लें या लेबर कर लें वो कंप्लीट नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं दामोदर लीला में भी 2 फिंगर प्रिंसिपल्स क्या है कि ओवर एंडेवर लॉर्ड मर्सी। तो हमारे एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, बट सेम टाइम उससे भी मोर इम्पोर्टेंट क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी या भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम उससे परफेक्शन को नहीं पा सकते। पर जो कलयुग है इसमें क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो कलयुग के जो लोग हैं या जो वृत्ति है वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो अपने आप को ही डूअर मानते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही डूअर हूँ और मैं ही अपने बलबूते पे सब कुछ पा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम जैसे आगे भी पढ़ रहे हैं कि जब तक अल्टीमेट भगवान की सैंक्शन या कृपा नहीं होगी तो हम वो सक्सेस को नहीं अचीव कर सकते। और इसमें जैसे युधिष्ठिर महाराज आगे बता रहे हैं कि अपने एग्जाम्पल से ही बता रहे हैं कि जो मैं एक अच्छा राजा हूँ या मेरे राज्य में जो भी सुख संपदा या जो भी प्रजा की जो संपदा है वो किसकी वजह से है, वो भगवान की कृपा की वजह से है। और वो इसका सारा श्रेय भगवान को दे रहे हैं। और इसमें एक लास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एनालॉजी है काइंड ऑफ कि अगर अगर भगवान की कृपा को टॉप मोस्ट नहीं होती तो जो सो कॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतने एडवांसमेंट हैं, वो जैसे अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं पर फिर भी इनको नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भगवान की सैंक्शन नहीं है। बट हम देखते हैं कई बार कोई पेशेंट की बिल्कुल होप नहीं होती बट फिर भी वो ठीक होके वापस लाइफ में आ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको भगवान की कृपा मिल जाती है। तो कहने का भाव यह है कि प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान की कृपा होना, हमारे एंडेवर्स आर इम्पोर्टेंट बट ओवर एंड अबव सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम उस सक्सेस को या उस चीज को नहीं पा पाएंगे। Therefore, the conclusion is that God's sanction is the immediate cause for all happenings, good or bad. तो इसमें एक जैसे युधिष्ठिर इसमें एक और भी जैसे युधिष्ठिर महाराज का भी भाव ये भी है कि जो भक्त होता है वो हर एक चीज में भगवान की ही उपस्थिति देखता है। चाहे अच्छा हो रहा है तो वो देखता है, क्योंकि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वो ये देखता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरा इसमें कोई नहीं है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो ये देखता है कि हाँ कि मेरे ही प्राप्त पिछले जन्मों का कुछ रिएक्शन है या कर्म है जो मुझे इसका बड़ा कुछ मिलना था बट भगवान की कृपा से छोटा इसका रिजल्ट
रिएक्शन मिला है, तो वो हर एक चीज को मतलब भगवान के उसने अनुरूप में देखता है। इसलिए लास्ट में कह रहे हैं एनी सक्सेसफुल मैन शुड फील ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर ऑल ही हैज अचीव। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। लोग पढ़ सकते हैं। पश्योत्पातान्नरा व्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् शंसतो अतुरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्। Translation: Just see, O man, with a tiger's strength, how many miseries due to celestial influences, earthly reactions, and bodily pains. All are very dangerous in themselves, are foreboding danger in the near future Deluding by deluding our intelligence. Perfect. Material advancement of civilization means advancement of the reactions of the threefold miseries due to the celestial influence, earthly reactions, and bodily or mental pains. By the celestial influence of the stars, there are many calamities like excessive heat, cold, rains, or no rains, and the after effects are famine, disease, and epidemic. The aggregate result is the agony of the body and the mind. Man-made material science cannot do anything to counteract these threefold miseries. They are all punishments from the superior energy of Maya under the direction of the Supreme Lord. Therefore, our constant touch with the Lord by devotional service can give us relief without our being disturbed in the discharge of our human duties. The Asuras, however, who do not believe in the existence of God, make their own plans to counteract all these threefold miseries, and so they meet with failures every time. The Asuras, however, do not believe in the existence of the God, make their own plans to counteract all these threefold miseries, and so they meet with failures every time. The Bhagavatam 7:14, the Bhagavad Gita 7:14 clearly states that the reactions of material energy is never to be conquered because of the binding effects of the three forces. They can simply be overcome by one who surrenders fully in devotion under the lotus feet of the Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी material advancement of civilization in advancement of the reaction of threefold miseries due to celestial influence. यहाँ पे प्रभुपाद जी threefold miseries के बारे में बता रहे हैं कि हमें लगता है कि हम material advancement कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वो उसी में दे रिएक्ट अस बिकॉज व्हाई बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ द मटेरियल नेचर। तो तीन प्रकार के, जैसे हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, क्या क्या है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये जो तीन प्रकार की मिजरीज हैं, अगर क्या है कि क्योंकि हम लॉर्ड सेंटर में नहीं है, भगवान को नहीं सर्व कर रहे, और हम इन मटेरियल एग्जिस्टेंस या एडवांसमेंट पे ही ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, तो वो जो भगवान की माया शक्ति दुर्गा देवी है, वो फिर हमें इन तीन जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि शक्ति से हमें रिएक्ट करती है, हमें पनिश करती है। और उसका क्या रिजल्ट होता है, जैसे लिखा हुआ है कई जगह, कई जगह ज्यादा ठंड होती है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, ज्यादा ठंड पड़ जाती है, कई जगह ये बारिश है और कई जगह नहीं है, कई जगह सूखा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि मतलब ये हमें जो भगवान की जो माया शक्ति है, वो हमें इन तीन थ्री फोल्ड मिजरीज के द्वारा हमें पनिश करते हैं। The aggregate result is the agony of the body and the man and mind. Man-made material science cannot do anything to counteract these threefold miseries. They are all punishment from the superior energy of the Maya under the direction of the Supreme Lord. Therefore, our constant, तो इसका आगे फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हमें इन सब से छुटकारा पाना, या हमें इनसे बचाव
ओवरकम करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि भगवान की डिवोशनल सर्विस करना है। जैसे 7.14 का अभी इसमें भगवद गीता में नीचे रेफरेंस है ना, कि जिसमें भगवान कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, कि ये मेरी जो थ्री फोल्ड मिजरीज वाली माया है, माया शक्ति है, इसको पार कर पाना बड़ा ही असंभव है। बट दोज हु सरेंडर टू मी दे कैन वेरी इजिली ओवरकम दिस। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवान की शरण लेते हैं तो ये जो थ्री फोल्ड मिजरी जो हमें पनिश करती हैं, दिस सेम टाइम बिकम ओवर गाइडिंग हेल्प और गाइडिंग हैंड, एंड दे हेल्प अस इन अवर डिवोशनल लाइफ। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आगे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट मोशन। Thank you, Prabhu. Next is Vedansh. You want to read? Hare Krishna. Urvakshipa Bhagavaya Surantyam Kapuna Puna Vipadhustapi Hridaye Aradasyanti Vipriyam. Translation: the left side of my body, my thighs, arms and eyes are all quivering again and again. I am having heart palpitations due to fear. All this indicates undesirable happenings. Perfect material existence is full of undesirable things. We do not want are forced upon us by some superior energy, and we do not see that these undesirables are under the grip of the three modes of material nature. When a man's eyes, arms and thighs quiver constantly, one must know that something is happening which is undesirable. The undesirables are compared to fire in a forest. No one goes into the forest to set fires, but fires automatically take place in the forest, creating inconceivable calamities for the living beings of the forest. Such a fire cannot be extinguished by any human effort. The fire can be extinguished only by the mercy of Lord, who sends the clouds to pour water on the forest. Similarly, undesirable happenings in life cannot be checked by a number of fronts. Such miseries can be removed only by the mercy of the Lord, who sends his bona fide representatives to enlighten human beings and then save them from the all calamities. थैंक यू प्रभु जी फॉर इट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही आगे बता रहे हैं कि मटेरियल एग्जिस्टेंस इज फुल ऑफ अनडिजायरेबल्स। यहाँ पे वही मतलब थिंग्स वी डू नॉट वांट आर फोर्स्ड अपॉन अस बाय सम सुपीरियर एनर्जी। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम पिछले श्लोक में पढ़ा था कि जो थ्री फोल्ड मिजरीज हैं वो हमें मतलब कहीं ना कहीं हम चाहे ना चाहे हमें जैसे हम सोच सकते हैं कि हम ये प्लान बनाने अपना वो प्लान बनाने, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें उसका रिएक्शन या रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अनलेस कि हम जैसे हमने पीछे पढ़ा था सरेंडर टू द लॉर्ड और वी एक्सेप्ट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मतलब कि थिंग्स मीन जैसे है कि थिंग्स वी डू नॉट वांट फोर्स, कि हम चाहे ना चाहे, क्योंकि ये मटेरियल जैसे हमने पीछे के सेशन में पढ़ा कि इससे जो ये जो भौतिक जगत है इसका नेचर क्या है, दुखालय में शाश्वत या पदम पदम विपता। मीन यहाँ पे हर 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 पदम पे या हर पग पे कुछ ना कुछ चेंज या प्रॉब्लम आती रहे, क्योंकि ये मटेरियल, क्योंकि इसका नेचर ही यही है। ये मटेरियल नेचर जो है इसका, इसकी नेचर, इसका जो रियल स्वरूप है यही है, दुखालयम अशाश्वतम। बट आगे बता रहे हैं कि दीज अनडिजायरेबल्स आर, और इसके यहाँ पे आगे एक कंपैरिजन किया गया है, बताया प्रभुपाद जी ने कि जैसे ये जो हमें मटेरियल एग्जिस्टेंस में ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, थ्री फोल्ड या और भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो जैसे इसका एक कंपैरिजन किया कि जैसे जंगल में कई बार आग लग जाती है, तो वो आग कैसे लगती है, कोई लगाता नहीं बट अपने आप लग जाती है। तो वैसे ये जो
हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस में या मटेरियल लाइफ में या लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है ये भी ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। तो इसको सच ए फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी ह्यूमन बीइंग, दे कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द मर्सी ऑफ। तो जैसे आग का एग्जांपल के थ्रू प्रभु जी बता रहे हैं कि जंगल में जब आग लग जाती है तो उसका हम अपने एफर्ट से या मैन मेड एफर्ट से या हम फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बचा सकते, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पे लगती है आग। बट अगर भगवान वही उस ऊपर से वर्षा कर देते हैं अपनी कृपा करके, तो वो आग एकदम जल्दी से बुझ जाती है। तो सेम वे हम जो हमारी लाइफ में भी अगर देख सकते हैं कई प्रकार के अनवांटेड, जैसे इसमें आ रहा है सिमिलरली अनडिजायर हैपनिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी चेक्ड बाय एनी नंबर ऑफ प्लान्स, बट सच मिजरीज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हम हमारे लाइफ में भी हम भी जैसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, हम भी कई तरह के प्लान बनाते हैं, बट वो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट वर्स में पढ़ा था कि अनलेस वी हैव लॉर्ड मर्सी या लॉर्ड ब्लेसिंग्स वी कैन नॉट अचीव दैट थिंग। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि वैसे ही अगर जैसे जंगल की आग को बुझाने के लिए भगवान वर्षा कर देते हैं तो वो आसानी से बुझ जाती है, वैसे ही हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या हम जिस तरह के इसमें थ्री फोल्ड मिजरी में फंसे हुए हैं, तो उसको उसको कैसे रिमूव, हम अपने प्लान से कभी नहीं वो क्या कह सकते हैं रिमूव कर सकते या उससे बाहर आ सकते हैं। बट सेम टाइम अगर हम एक भगवान हमें हमारी इसमें लाइफ में या हमें किसी एक बोनाफाइड गुरु या अपने शुद्ध भक्त से मिला देते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन को में जब उनकी गाइडेंस में या इंस्ट्रक्शन में जब हम उनको फॉलो करते हैं जो भी एडवाइस है, तो देन वी कैन वेरी इजीली कम आउट फ्रॉम दिस कैलेमिटीज। तो इसका एक जैसे एग्जांपल भी है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कोई समुद्र या किसी गहरी नदी के बीच में गिर जाए तो वो बहुत बड़ी नदी है तो नहीं आ सकता तैर के पार करके बाहर। बट सेम टाइम अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर या से हवाई जहाज से रस्सी फेंकेगा तो उसको पकड़ के वो आसानी से उस भव सागर को या उस नदी को पार कर सकता है। वैसे ही सेम टाइम यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके उनको उनको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और उनके फॉलो करते हैं तो वी कैन आल्सो सेव फ्रॉम दी कैलेमिटीज। ठीक है प्रभु जी, इसमें इतना ही है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Should I read? Yes, yes, प्रभु जी। शिवे शोद्यंतम आदित्यम अभिरावती अलनानना मामंग शरेण्यो अयम अभिरेभति अभिरुवा. Translation. Just see, O Bhim, how the she-jackals cries at the rising sun and vomits fire, and how the dog barks at me fearlessly. These are some bad omens indicating something undesirable in the near future. हरे कृष्ण। अब आगे की तो अब आगे के कुछ वर्षन में ऐसे ही मतलब जस्ट वन लाइन ट्रांसलेशन है और परपट ज्यादातर में नहीं है। क्यों नहीं है, बस ये वो जो और जो इनऑस्पिशियस साइंस है उसके बारे में महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं कि आगे वो क्या देख रहे हैं और भीम को मतलब बता रहे हैं। तो बस इसको हम वी कैन जस्ट रीड मतलब। ठीक है प्रभु जी। इसमें शास्ता कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो अपरे वाहंश्च पुरुष व्याघ्रः लक्षयैरुदतो मम. O Bhimsen, tiger amongst men. Now useful animals like cows are passing. Tiger amongst men. Now useful animals like cows are passing me on my left side, and lower animals like the asses are circumambulating me. My horses appear to weep upon seeing me. Mrityu-duta kapoto ayam Tulukaha kampayan manah Prayulukascha kuvaner Vishwam swe shunyam ichchata. yes. Just see, this pigeon is like a messenger of death. The shrieks of the owls and their rivals' crows make my heart tremble. It appears that they want to make a void of the whole universe. Should I continue, Prabhu? देख लीजिए प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मतलब मेरी तरफ से तो मैं आई एम नॉट एनीथिंग टू कमेंट। आप देख लीजिए इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन एनी ऑफ द श्लोकास या जो ट्रांसलेशन है आप यू कैन ऐड प्लीज।
धूम्रदिशा परिधाय कंपते भूसहाद्रिभिः निघ्रातश्च महंस्तात साकं च स्तनैर्नुभे स्तनैर्नुभे. Just see how the smoke encircles the sky. It appears that the earth and mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blue. Vayurvati khara sparsho rajasa visrijam stamaha ashrig vashanti jalada vibritsham iva sarvataha. The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with bloody disasters. Suryam sthata prabham spashya grihamardam smitho divi shishankaler bhuta agner jvalite ivarodashi. The rays of the sun are declining and the star appears to be fighting amongst themselves. Confused living entities appears to be ablaze and weeping. Nadyo nadascha shudhite sharamsi cha manamsi cha na jalati agnir ajyena agyena kalo ayam kim vidhasati. Rivers, tributaries, ponds, reservoirs, and the mines are all perturbed. Butter no longer ignites fire. What is this extraordinary time? What is going to happen? Na pibanti stanam vatsa naduyanti cha mataraha ridanti ashru mukhagavo na rishyanti rishabhavraje. The calves do not suck the teats of the cow, nor do the cows give milk. They are standing crying tears in their eyes, and the bulls take no pleasure in the pasturing grounds. Devatani rudanti va siddhyanti hi uchalanti cha ime jana pada grama puryo puraudyana akara ashrama bhrashta shriyo nirananda kim agham darshayanti nah. The deity seems to be crying in the temple, lamenting and perspiring. They seem about to leave. All the cities, villages, towns, gardens, mines, and hermitages are now devoid of beauty and bereft of all happiness. I do not know what sort of calamities are now awaiting us. Manye etar mahotpater nunam bhagavata pade heen bhur hata saubhag. Sorry. Anan Manya etar mahotpater nunam bhagavata pade ananya purusha shribhir hina bhurhata sobhag. I think that all these earthly disturbances indicate some greater loss of the good fortune of the world. The world was fortunate to have been marked with the footprints of the lotus feet of the Lord. These signs indicate that this will no longer be. Iti chintayastasya drishtarishtena chetasa Ragya Pratyagamat Brahman Yadu Purya Kapidvaja. O Brahman Shanak, while Maharaj Yudhishthir, observing the inauspicious signs on the earth at that time, was thus thinking to himself, Arjun came back from the city of the Yadus, Dwarka. Tam padayor nipatitam ayatha purvam aturam adho vadanam abindun bindun shrijantam nayanam jayo. When he bowed at his feet, the king saw that his dejection was unprecedented. His head was down and tears glided from his lotus eyes. Vilokyodvigna hridayo vich- vichayam anujam nripah prichati sma suhrin madhye samsmaran narid naraderitam naraderitam narad iritam.
Seeing Arjun pale due to heartfelt anxieties, the king, remembering the indications of the sage Narad, questioned him in the midst of prints. Yudhishthir Uvacha Kachid Anarthapuryam Nah Swajana Sukham Asate Madhu Bhoja Dasha Dashar Arha Satvata Andha Vrishnaya. Maharaj Yudhishthir said, my dear brother, please tell me whether our friends and relatives such as Madhu, Bhoj, Dashar, Arha, Satvat, Andhak, and the members of the Yadu family are all passing their days in happiness. Suromat Mahakachid Swasti Aste Vatha Marisha Matula Sanstanu Jakachit Kushali Anaka Bandhubi. Is my respectful grandfather Sushen in a happy mood? Are my maternal uncles Vasudev and his younger brothers doing well? Saptaswar Saras Tatpatnyo Matulanya Sahat Majah Asate Sashnun Sa Kshemam Devaki Pramukha Swayam. His 7 wives, headed by Devaki, are all sisters. Are they and their sons and daughters-in-law all happy? हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी टाइम हो गया, देख लीजिए मतलब एज यू विश टू कंटिन्यू. So we will continue from this on Saturday. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रभु जी. तो प्रभु जी जो लास्ट वाले कुछ वर्सेस पढ़े, इसमें कुछ मतलब क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? मतलब मैंने तो कुछ नहीं ऐसा ऑब्जर्व किया. These are all auspicious or inauspicious signs that Yudhishthir Maharaj, he knows actually what is about to happen, and also that Lord is about has disappeared, but he doesn't know, but disappeared or about to disappear. The signs appear. Yeah, inauspicious omens. मतलब भगवान चले गए थे जब तक अर्जुन गया और वापस आया, मतलब ही हैड ऑलरेडी गॉन बैक, मतलब ही हैड लेफ्ट, मतलब जो. That is why these signs are there. No? Okay. Otherwise, in the presence, why would there be any such signs? The signs are there because it is gradually progressed. The Kali Yuga age started, Started. Okay. or the Sandhi started. Thank you so much. Thank you. ठीक है प्रभु जी, मतलब we can close the session. अगर कुछ है, कुछ if there is any comment तो मतलब devotees can share, otherwise we can close the session. Thank you so much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जगद्गुरुशीलप्रेभुपादास्मि जय हरे कृष्ण. गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण.